अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज का जो सेशन है बाय द वे, उसमें हमारे जो गेस्ट हैं वो उमर साहब है। बेसिकली ही इज रिसर्च एनालिस्ट एट चेस सिक्योरिटीज। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम शजील, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई, बेसिकली आज का जो हमारा सेशन है वो जो हमने एक रिपोर्ट निकाली है नई, मैग्निफिसेंट सेवन, उसके हवाले से है। तो इस रिपोर्ट के बारे में बताइए, थोड़ा सा ब्रीफ तो करिए। ये रिपोर्ट हमने निकाली है। मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। जी जी बिल्कुल। हो रही है शेयर? नहीं, अच्छा, आई गेस आई अलाउड यूज दैट। अटक गया। चलें। ओके, शेयर स्क्रीन। तो ये बेसिकली मैग्निफिसेंट सेवन अमेरिका के अंदर एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है फॉर द सेवन बिगेस्ट कंपनीज दैट आर ब्लू चिप्स एंड रेगुलरली प्रोवाइड पे आउट्स एंड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल। सिमिलरली हमने इस रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट किए हैं कि पाकिस्तान के मैग्निफिसेंट सेवन कौन सी 7 कंपनियां हों। एज हमारी रिसर्च के मुताबिक बेस्ट 7 कंपनीज टू चूज फॉर दिस वर मीज़ान बैंक, लकी सीमेंट, एंग्रो फर्टिलाइजर्स, हबको, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, सिस्टम्स लिमिटेड एंड इंटरलूप। अब इन द पास्ट 5 years हमने पाकिस्तान की माशी हाल को काफ़ी दफ़ा तेज़ भी होते हुए देखा है और स्लो भी होते हुए देखा है। जैसे कि लास्ट ईयर हमारी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से काफ़ी हद तक हमारी इकोनॉमी रुक गई थी। आईएमएफ प्रोग्राम भी सिक्योर करते वक्त हमारी मार्केट ने काफ़ी सफ़र किया। तो इसी बेसिस पे हमने चूज़ किया कि हम 7 कंपनीज ऐसी निकालें विच इज़ द मॉडल पोर्टफोलियो फॉर एनी रिटेल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन, for somebody who wants just exposure to Pakistan but does not want to take on the additional risk of picking companies which may fail in this hard environment. So these are companies that have strong revenue growth, strong profitability over the years, have good market performance in terms of their share price, as well as have been giving dividends for the entire time. We can see over here कि अगर जनवरी 18 में आपने ये पोर्टफोलियो बनाया हुआ होता इन 7 कंपनियों का और फिर कंपेयर किया होता अपना रिटर्न KC 100 के साथ, तो बाय एंड लार्ज दिस पोर्टफोलियो वुड हैव आउट परफॉर्म द इंडेक्स। इधर हमारे पास एनुअल रिटर्न्स है, तो जैसे आप देख सकते हैं 2018 के अंदर इंडेक्स ने दिया है नेगेटिव रिटर्न, लेकिन हमारे मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज ने दिया है पॉजिटिव रिटर्न। 2019 के अंदर हम मार्जिनली कम रिटर्न देख रहे हैं मैग्निफिसेंट 7 के अंदर। 2020 के अंदर इन ईयर जहाँ स्टॉक मार्केट के अंदर हमने बहुत बड़ी करेक्शन भी देखी वर्ल्ड ओवर, हमने इक्विटी प्राइसेस को डिप होते हुए देखा, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मैग्निफिसेंट 7 हैज़ प्रोड्यूस्ड a return for that year for over 40%. Similarly, 2021 के अंदर भी उसने outpace किया. This is primarily driven by the growth in Systems Limited at this point. But what we can see here is that in every subsequent year, in every year for the most part, and as an overall indicator, the Magnificent Seven have performed better than the KSE 100 index. इधर हमने ईयर ऑन ईयर रिटर्न, ये तो अब एक पाकिस्तानी इन्वेस्टर के लिए मेन चीज़ क्या होती है? सबसे पहले वो कहते हैं कि हमें KSE 100 चाहिए, उसके बाद फिर वो कंपेयर करते हैं इंटरेस्ट रेट से, और अगर इंटरेस्ट रेट से कोई कंपेयर नहीं करता तो इन टाइम्स ऑफ वेरी बिग डिवैल्यूएशन यू लुक टुवर्ड्स द डॉलर। जैसे हमने फ्लाइट ऑफ कैपिटल टुवर्ड्स द डॉलर देखा था लास्ट ईयर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज इन्वेस्टर इन पाकिस्तान टू मेजर देयर रिटर्न्स अगेंस्ट द डॉलर एंड सी इफ दे आर इवन प्रोड्यूसिंग एनी सॉर्ट ऑफ advantage to the dollar by because out of share being present in a developing economy. As we can see here, हमारे KSE 100 ने about 60% रिटर्न दिया है over the past 5 years. Magnificent 7 ने दिया है over 160%. Whereas if you had parked your money in government securities and availed the 1 year PKRV rate at the start of every year, your compiled return would have been about 90%. USD has performed better at about 150%, but as we can still see, the Magnificent 7 companies are outperforming even the US dollar. अब इस स्लाइड में हमने इसेंशली ये किया है कि हमने 7 कंपनी के रेवेन्यू को टोटल किया है, उनके नेट प्रॉफिट को भी टोटल किया है और उनके मार्केट कैप को भी टोटल किया है। क्योंकि एज एन इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट सिर्फ इस कंपनी में नहीं कर रहे, आप 7 कंपनी में कर रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट ये होगा कि 7 की 7 कंपनी का रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और मार्केट कैप बढ़ते रहे। इवन इफ वन और टू डोंट परफॉर्म वेरी वेल इन अ ईयर, द एक्सपेक्टेशन इज दैट अदर्स विल फिल इन द गैप।
while we are also expecting them to fill in the gap, what we can see here is that in the past 5 years, these 7 companies alone have returned a phenomenal figure of 175 billion rupees to their shareholders. These are shareholders who are receiving dividends. These are shareholders who are getting capital gains, and they are being enriched by share buybacks, which are causing their own shares to appreciate. सो अब बेसिकली हमारे जो स्टार्ट में मैंने आपको बोला था कि हमारे पोर्टफोलियो को हम इस नज़र से देख रहे हैं कि इन अ वॉलेटाइल एनवायरनमेंट व्हाट कैन एन इन्वेस्टर बेनिफिट. इस वॉलेटाइल एनवायरनमेंट के अंदर भी 5 years ऑफ बूम एंड बस्ट साइकिल्स वी आर स्टिल सीइंग डिविडेंड्स एंड बायबैक्स from these companies. This basically means that regardless of how things go moving forward, we can expect these companies to keep paying out stable dividends. अब यहाँ पे हमारे पास लकी सीमेंट है. जैसे कि आप लोग सबको पता है कि लकी सीमेंट एक जमाने में सिर्फ एक सीमेंट की कंपनी होती थी. आज अगर आप लकी सीमेंट के शेयर होल्डर हैं, आपका किया मोटर्स के अंदर भी है, एनर्जी सेक्टर के अंदर भी है, रियल एस्टेट के अंदर भी है, कि लकी सीमेंट इज नाउ अ कंसोलिडेटेड इन कंग्लोमरेट which covers many different business segments. So you are getting a lot of exposure and a lot of diversification by holding just this one company alone. Then we have Mizan Bank. Mizan Bank, जैसे आप सबको पता है, one of the fastest growing banks in Pakistan and also one of the biggest growing banks. फिर हमारे पास Systems Limited है, a great tech company that has shown great growth over the years, and moving forward, we are also hoping for the same. फिर Interloop है हमारे पास, textile, a great big part of our economy, export oriented, something that every Pakistani would want exposure to. फिर हमारे पास Hubco है, एंग्रो फर्टिलाइजर है, हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है. फर्टिलाइजर इज नेसेसिटी, हर साल इस्तेमाल होता है, एंड देयरफॉर दिस कंपनी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हैज बीन प्रोवाइडिंग डिविडेंड पे आउट रेशियोज ऑफ अबाउट 90 to 100%. Then we have Pakistan oil fields. Now, essentially what we're looking at here is that this portfolio is designed for someone who wants exposure to Pakistan. It is not making any investor immune to the risk of Pakistan. ये 7 companies choose करके ये नहीं होगा कि पाकिस्तान की मार्केट डाउन जाएगी और आप बहुत पैसे कमाएंगे. इसमें सिर्फ ये होगा कि आपकी चीप वैल्यूएशन पे आप अच्छी कंपनीज ले रहे हैं जिनके अच्छे ग्रोथ होंगे, अच्छे डिविडेंड होंगे, और साथ में गोइंग फॉरवर्ड आपको ये भी पता है कि दीज आर मार्केट लीडर्स इन देयर सेपरेट सेक्टर्स. सो देयरफॉर यू आर इन्वेस्टिंग इन द ब्लू चिप कंपनीज ऑफ पाकिस्तान. तो इसका फिर हमने शॉर्ट फॉर्म निकाला, सिस्टम्स, हबको, इंटरलूप, मीजान, Pakistan oil fields, Lucky Cement, and EFERT come together to form our investment strategy of Shimple. जी सर जी. परफेक्ट उमर भाई, बेसिकली आई गेस काफ़ी अच्छी ब्रीफिंग दी आपने. बेस्ट है. मेरा सवाल बाय द वे ये है कि ये तो हमने हिस्टोरिकल डेटा को कंसिडर करते हुए उसको हमने देखा कि कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस भी हमने देखा कि इट इज़ परफॉर्म वेरी वेल. कंपेयर टू इंडेक्स भी हमने देखा कि जब इंडेक्स के कंपैरिजन में पिछले 5 सालों के डेटा को लेते हुए देखा कि अगर हमारे पोर्टफोलियो में ये 5 कंपनीज होती तो वी वुड हैव डन वेल. नॉट नॉट जस्ट इन दोज ईयर्स वेयर मार्केट वाज रियली गुड. इनफैक्ट इन दोज ईयर्स जहाँ पे मार्केट थोड़ी बेरिश भी थी, वहाँ पे ओवरऑल इंडेक्स ने ज़्यादा करेक्ट करा. और अगर हमारे पोर्टफोलियो में ये वाली कंपनीज थी तो वी वुड हैव बीन स्लाइटली बेटर ऑफ. तो फ्यूचर में क्या एंटिसिपेशन है इन कंपनीज को अगर हम पोर्टफोलियो में रखते हैं? अगर आप इंडिविजुअल कंपनी को कवर करना चाहते हैं या ओवरऑल कवर करना चाहते हैं तो उसके बारे में बताइए. तो जैसे कि आपने मेरी लास्ट स्लाइड में देखा होगा कि राइट नाउ पाकिस्तान एज अ मार्केट इज वेरी चीप. एक मार्केट को मेजर करने का तरीका होता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो. जैसे एक बिजनेस है जो हर साल 10 रुपए कमा रहा है, और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये परपेचुअली 10 रुपए कमाते रहेगा और आपको ये अर्निंग्स देते रहेगा, तो आप में भी 100 रुपए का वो शेयर खरीदेंगे. दैट मीन्स इट्स अ पी रेशियो ऑफ 10. Pakistan historically has traded at a much higher P ratio as a market than it is today. We are looking at valuations much cheaper than before. This is primarily because of the risk that's inherent with investing in Pakistan. But by and large, all 7 companies are presented at a cheap valuation when you look at their growth prospects. अगर इंडिविजुअल कंपनी बेसिस पे देखे जाए, तो अगर आप बिलीव करते हैं कि सऊदी अरेबिया इज गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशनाइज्ड इकोनॉमी इन 10 years, so Systems Limited is a company which derives most of its revenues
from companies in the Middle East and Northern Africa region. इसका मतलब ये है कि as long as Saudi Arabia continues to push for a transformation of its economy, companies like Systems will continue to grow. Similarly, we have Angro Fertilizer. Angro Fertilizer has been around for a long time. ये एक stable company है जिनकी dividend yield फिलहाल around 20% चल रही है, which is a great return. अगर आप देखें कि हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि विद इन द नेक्स्ट 6 months वी विल सी सम फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन द पॉलिसी रेट बाय स्टेट बैंक. अगर ये होता है तो अगर फर्ज करें पॉलिसी रेट आज हम देख रहे हैं कि 22% है, अगर पॉलिसी रेट और इफ एग्रो फर्टिलाइजर का हम देख रहे हैं कि यील्ड एक ही होएगा एट 20%, इट विल ऑब्वियसली प्रेजेंट अ लॉट ऑफ कैपिटल गेन्स अपॉर्चुनिटीज टू. Similarly, it's also the fact that Anglo Fertilizers deals in fertilizer. One of the biggest things, one of the biggest inputs for the agricultural sector is fertilizer. So these are definitely companies that you want to invest in. Mizan Bank, it's an Islamic bank. It does not suffer from the high cost of deposits that conventional banks suffer from, which is why it has been able to drive profitability over the years, and which is why it will continue to drive profitability over the years. I can't hear you, Mike. I guess काफी अच्छा cover करा उमर भाई आपने. Thank you so much for taking out time for this session. It was Thank you. brilliant. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. Hafiz.